everyone. So, all of us have too much going on in our life and in our mind, and we always say to talk it out in order to feel We're light not live and to yet, feel better. right? Jumping Mind is one of its kind mental health tech startup. A safe place to connect with friends Hello. and talk about real We are not life live challenges. right To Yeah. spread So 1 billion perfect. smiles. now. That's what we aim for. We are Jumping Minds. We are Jumping Minds. So, download Jumping Minds app today and feel better instantly through personalized smart solutions. Have you ever wondered what it takes to carry out last mile delivery? Logistics is something that we all rely on every day. While getting stuff from point A to B may seem simple, doing it a million times a year across the most difficult terrains of the country and in remote corners of India is about as complicated as it gets. With a fleet of more than 7,500 trucks in over 600 cities and a network of 33,038 pin codes, Safe Express covers every square inch of India and delivers to the last mile and beyond. Keeping track of what is happening where requires us to capture that data at various levels. If we did that on a manual basis or on an unstable ERP, it would just not be possible ever. Digital transformation has played a key role in helping us stay ahead of the curve and is critical to our business operations. With platform and cloud strategy being the core pillars of our
So, are there any audience still, or are we just four of us? I believe. So it would be like a panel discussion. It's like you can say a private Zoom session, but it's going to be live streamed on our YouTube channel, and it's going to be kept there. So there's not going to be any engagement from the audience side or any interference from their side. It's like you all are free to talk anything with each other, and we have some questions which we'll put on. And yeah, let's just make this fun and interactive. Perfect. Good. So I guess then, like, let me just start it and brief you all about what E-Summit is first, because of which we are here right now. So hello everyone, and welcome to the day 6 of E-Summit 2022, the annual flagship entrepreneurial festival of IIT BHU. The Entrepreneurship Summit themed ventures capacity with the motive of molding fresh entrepreneurs into monarchs of their domains, embraces various workshops, sessions, events, and competitions. This conclave becomes a perfect platform for collaboration among the students' community, venture capitalists, startups, and passionate people about entrepreneurship. Today, we are having a panel discussion with content creators named Creators Matrix. Creators are the newest generation of entrepreneurs, and they are building the next era of small businesses, changing the way we know businesses. It's my pleasure to be here today with all these achievers. So let me introduce you all with today's panelists. First, Sajal Goel. This dynamic content creator speaks about finance, business, and imparts knowledge to his 190,000 followers on Instagram. Second, we have Rasleen Grover. She has 30,000 followers on Instagram. She is a YouTuber and creates content around education, study abroad, and career path. She's also the founder of Policy Radio. Next, we have Sejal Sood. She is an entrepreneur, YouTuber, international speaker, and former honorary director at ISERD Research and Analysis Wing. And also, congratulations on recently crossing 50,000 followers on Twitter. And lastly, we have none other than Sushant Vindel. He's a personal finance, investment, and crypto advisor, trainer. He has presided over 65 plus seminars, including Joe Stocks, and is founder of Money Monitors. Welcome you all to this panel discussion. Thank you, man. That was for the amazing introduction. Yeah. So, it's like all our audience are curious about your journey, how you all begin. Why did you all enter into this content creation space? What inspired you all? So if you all can go one by one, brief about yourself. How did you start entering into this content creation space? Anyone can start from the... Yeah, man. So shall I go ahead? Yeah, Sajid. So I entered into content very recently. So when pandemic hit and lockdown hua, so I was on the content consumption side a lot. Matlab, I was consuming a lot of tech content, not business content, but tech content like Jay Kapoor ka ho gaya and Element Tech. So I was really into that, and so I began my content creation journey as a tech reel creator. So I began with that, but eventually over the course of time, I shifted to business content and finance content thoda. So eventually that happened, and उसपे मतलब मुझे भी satisfaction मिल रही थी creating that, and I was getting good numbers with that also. So that was a win-win situation for everyone. So I decided to go deep into content creation, and then after 12th ended, there is a brief period of about 1 month. So usme I started creating content regularly, posting daily reels, and eventually 3 months tak I got literally no results, and then one reel popped up, and that got me good numbers, and uske baad mein matlab thoda serious ho gaya, and that's how this stuff is going on. It's fun. So how old are you, Sajal? How old are you? I'm 18, bro. बाप रे, ये देखो 18 पे I had no idea what I was doing. Chalo. Nice. Anyone else who wants to continue? Sushant, if you want to continue. Okay. So honestly,
I was the kind of a person who would always, be like, "यार क्या चला रखा है Instagram पे लोगों ने, क्या रील कर रहे हैं," like that. जो एकदम critique वैसा कि यार ये सब नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा करके, and always, telling people not to be on Instagram, मत करो ये वो उस type का वो I was like that. So so my content creation journey was a forceful start. Okay, so I started teaching first. I taught technical analysis and all those things. So my students forced me to do content creation. They were like, you have knowledge, you should go on a bigger platform, blah 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 blah. I'm like, मेरे पास time नहीं है, I'm a company to run, तो नहीं कर सकता. They're like, we'll do everything. We'll edit, we'll post, we'll do everything. You just record and send it to us. They were so nice to me कि हम सब कर देंगे, आप बस डाल दो. It was like that. It started like that. And honestly, आज तक I'm very proud when I say this कि आज तक I have not scripted any of my content so far. Like मेरा क्या होता है, simple सा है, content creation का कुछ नहीं कि I'll just कुछ दिमाग में आया, shoot किया, डाल दिया. It's more of like that. मतलब ज़्यादा कोई वो नहीं है. तो it started forcefully, but उसके बाद I realized कि how many people were resonating with it. They were enjoying the content and everything. So I just went on with it, and now I love it. So yeah, that's more or less. ज़्यादा कोई बड़ा वैसा story नहीं है. An excellent start. Yeah, anyone else who wants to jump in right now? Yeah, so I started content back in college. I graduated last year. तो उस time पे तो YouTube का बहुत craze था, Instagram तो बहुत late आया. So then I started documenting my journey. I used to vlog. तो बहुत मजा आता था, but I was never that serious about it. Then pandemic happened, and उसके बाद because I was in my final year, so I come from a very academic family. तो ये तो है कि पढ़ाई तो करनी ही है. And then I was like, चलो ठीक है. Then I started preparing my application for my masters क्योंकि मुझे बाहर जाना ही है. I was like, चलो इसके around कुछ content बना सकते हैं, because I know not many people are aware about different scholarships and different opportunities जो बाहर है. And then I started making reels, but I wasn't consistent for a very long time. It was exactly back in November, October last year, जब मैं थोड़ी सी consistent हुई. And then I started seeing कि अच्छा numbers grow कर रहे हैं, everybody is liking the content, लोगों को इतनी knowledge नहीं है, which I can really share and help people out. And then I was consistent for almost 2 months, रोज regularly reels डालती गई, and now it's doing pretty well. I'm happy that I'm able to help somebody out there. And yeah, that is how I started my journey. Okay, so I'll go next. I'll go last. Yeah, so how did I start my content journey? So, 2020, it was the pandemic, we all know, and I was a very social person at school. But what happened was, my friends and I, 2020, I graduated from school. Now, सबका priority is different हो गया, and also because of the pandemic, socialization थोड़ा कम हो गया. So, at the point of time, I had a phase where I was slightly low on social scale, not getting to socialize, and also slightly low overall. So I got myself a mentor, and my mentor told me one thing, कि जो आप रोज, whenever you have a thought or whenever you read an article ना, तो आपको जो आए, you just write about it. So when I realized if I'm writing about it, I might as well start sharing it. So my content journey didn't start from Twitter per se, but it started from LinkedIn. For 3 to 4 months, I created content over there. It was going well, but LinkedIn पे मजा नहीं आया ज़्यादा. Then I said, चलो मजे वाली जगह चलते हैं, Instagram पे जाने का मन करा. बट फिर क्या हुआ, मैं थोड़ी सी मैं कैमरा शाय तो नहीं हूँ और शाय भी नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसे लगा कि Instagram पे एफर्ट लगता है, चलो किसी और प्लेटफॉर्म चलते हैं. नो, दैट इज द ट्रूथ, किसी और प्लेटफॉर्म चलते हैं. तो मैंने कहा चलो ट्विटर चलते हैं, राइट. एंड माय मेंटर टोल्ड मी, यू आर स्विचिंग टू मच, ट्विटर पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे तो फॉलोअर्स मिलते ही नहीं. एंड मैं मन में सोच रही कोई ना, अब तो ट्विटर ही करके आना है, राइट, बिकॉज ही सेड नो. एंड आई वाज लाइक, अब मना करे, अब तो करके आना है सिर्फ ऐसे करने के लिए. So I started with 0 followers on Twitter on 5th March 2021. मेरा अकाउंट नवंबर में बन गया था because my mom said that you will enjoy Twitter. मैंने कहा कि ट्विटर पे तो सब कुछ पॉलिटिक्स होता है, क्या ही होगा. So that is the mindset I came with. But March 2021 is when a friend of mine insisted कि देखो ट्विटर अच्छा लगेगा, यहाँ पे ब्लू टिक वाले भी रिप्लाई करते हैं, तू ट्राई मार के आ. ठीक है, that's what my friend told me. That's the truth. मतलब सच है. ठीक है. So I was like, कोई ना ट्राई मारने में क्या हर्ज है. साथ में वो मुझे ना मीम्स भेजता था बहुत सारी ट्विटर से इकट्ठी करके. मैंने कहा नहीं, अब तो इसका स्टॉक वहीं से देखते हैं. So that happened, and I was anyways creating content, so shifted. So I started with Twitter, and I used to just daily share thoda what I'm learning, what things I'm interested in. I was anyways into a lot of pitching. I was pitching business plans at my school because हमारा वहाँ environment इस चीज का था. I was also interested in investing, but कोई सिखाने के लिए नहीं था.
So मैंने कहा कि ट्विटर में तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. So started creating content over there. Apparently उसी टाइम के आसपास ट्विटर स्पेसेस आई एंड मुझे वैसे ही बोलने का बड़ा शौक है, अभी आपको अभी भी दिख ही रहा है. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आई स्टार्टेड विद ट्विटर स्पेसेस. मेरे को रीडिंग अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा कि कंटेंट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड साथ ही साथ व्हाई नॉट होस्ट अ वीकली स्पेस जहाँ पे मैं एक बुक का एक चैप्टर करूंगी और जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ शेयर और डिस्कस करूंगी, उसके आगे कुछ भी नहीं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. So I decided why not build a community around it. And anyways, I am interested in entrepreneurship. I am interested in building a startup. So whenever you have a distribution network, whenever you have connections with people in the venture capital, with other startup founders, आपको एक advantage मिल जाता है. And even before coming to Twitter or probably coming to Instagram or LinkedIn, I used to socialize every month going to these entrepreneurship summits or probably हमारा स्कूल भी हमें काफी एक्सपोजर इन चीजों का दे देता था. तो मैंने कहा कि अब नेटवर्किंग पे तो वापस आना पड़ेगा. एंड मेरे मेंटर ने एक चीज समझाई थी कि जब तक आपका डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है ना आज की एज में, तो आप कहीं पे भी नहीं है. बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट इज समथिंग कि मैं अभी आई थिंक आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, करंटली आई एम इन सोनीपत. You're in IIT BHU, Sajal is in Delhi, Sushant is sometimes in Bombay, sometimes in Rajasthan. अगर ऑनलाइन नहीं होते किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता. तो one thing he told me was कि just to increase your footprint, just to increase your reach and have a recall, because let's just say your startup doesn't work out, things you're interested in don't work out, you need to build a brand for yourself as well, and एक personal recall भी होना चाहिए. Let's just say things don't work out in my favor. Now what do? I need a job. कहाँ से आएगा? And if I go to apply to someone for a job and वो कहता है कि मैं तो आपको Twitter का content follow करता हूँ, आधी deal तो done है. Even when I came to college, I had seniors writing to me that we follow you on Twitter and we're very excited to, just meet you. So that's the kind of things content did for me. And मेरे को एक चीज क्लियर थी कि एक distribution network अपने लिए build करना है, साथ ही साथ एक brand recall बढ़ाना है. तो that was very much clear. तो Twitter was experimental only. साथ ही साथ उसके बाद मैंने क्या कहा, मुझे स्टॉक्स में इंटरेस्ट था ना और मुझे सीखना था, मुझे कोई सिखाने के लिए नहीं था. मैं जाती थी, like I had family friends who used to manage a lot of big funds, but what happened was they used to say very good, you're interested in stocks, but उसके आगे कोई बात नहीं करता था because एक 18 या 19-year-old, currently I'm 20, but उस टाइम के मेरे पोर्टफोलियो से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है. 1% of my portfolio is nothing, and that is the truth. So what happened? People now who come on TV, people who manage very big funds, वो मेरी स्पेस पे मुझे भी आके सिखाते हैं, एंड उसके साथ ही हमारे कभी कभी ऑडियंस 1200-1500 लिसनर्स को भी हिट करी है. तो एक तरीके से आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी इन माय स्कूल एज वेल. आई हैव रन प्रोजेक्ट्स अराउंड इट. आई हैव अंडरस्टूड हाउ मेल एंड फीमेल फाइनेंसेस आर डिफरेंट. आई हैव पिच्ड थिंग्स अराउंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पिच्ड बिजनेस प्लान्स अराउंड दैट. बट आई रियलाइज कि अब इसको अगर ग्राउंड रियलिटी बनानी है तो थोड़ा अपने लिए प्रॉपर नेटवर्किंग करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ जस्ट सिर्फ मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं बनाना है और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है. So that is how I've been using Twitter. I do sometimes post casually as well on Twitter, but my niche is around probably discussing things I'm interested in, things I'm learning about, and also discussing stocks, personal finance. That is something I'm very, very passionate about, and that is how I'm using Twitter. Amazing, Sajal. Amazing. Like at first, like Sajal told that he had one Insta reel that got viral. So सबके साथ ऐसा हुआ रहेगा with Sushant too, and Sajal too, where you might have one post or one tweet or which like got viral, which got much attraction. So what are like your views on it? That what made that happen, and what are the factors that were involved? Anyone who wants to like jump in. Yeah, like bro, you never know what's gonna work in content creation. You never know कि मतलब ऐसा there are times when like I expect कि this reel is slightly okayish, but that gains lot of attraction and eyeballs. But on the other hand, जिस reel में यार मैंने बहुत मेहनत लगाई है, everything is great and I expect it to work, वो नहीं चलती. So in the field of content creation, you never know what's gonna pop out and what Instagram or Twitter, YouTube, किसका algorithm आपकी post को कब push कर देगा. And talking about algorithm, I am not going to like deny the fact that I don't get upset by algorithm shifts and stuff that impacts you, but gradually when you are spend time with your profile and stuff, so you get to know कि algorithm नहीं है कुछ भी, like just stick to it and create content consistently. That is just the key that I have discovered in past 6 months. So yeah, man. I've heard so many people say this कि जिस रील से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि this will blow up, वो बहुत अंडर परफॉर्म करती है. एंड कोई ऐसे रैंडम हैवी रील डाल दी होगी कि
कि वो तो कुछ है ही नहीं. Sometimes that thing blows up. So, there's nothing really you can do about it. No one can actually crack algorithm ki nahi. This is the, ये recipe है, ये ingredients है, just do that and viral reel मिल जाएगा. वरना फिर sense ही क्या बना, फिर तो हर कोई viral reel बना देगा, right? So, I think it is good that it is random. Because again, वरना फिर वो बहुत common चीज हो जाएगी, right? कि कोई भी viral reel बना देगा, right? So there's no perfect algorithm. What you can do from your side is be consistent, be real, add value. ये सब चीजें करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, कोई एक रील की वजह से जो ऑडियंस आती है ना, वो दूसरी रील की वजह चली भी जाएगी, उनको अच्छा नहीं लगा तो. इंस्टाग्राम की ऑडियंस इज वेरी दिस वॉलेटाइल. उनको नहीं पसंद आएगा वो अनफॉलो करेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कल किसी से बात कर रहा था, तो कि लोग इंस्टाग्राम पे ना अपनी फॉलोइंग कम करने में लगे हैं, क्योंकि दिखता है ना किसके कितने लोग फॉलो करते हैं. तो you'll see people, कि उनकी 1000 फॉलोअर बहुत ज्यादा लग रहा है, काम करते हैं इसको 300 पे करते, 200 पे करते, कूल लगेगा, राइट? सो दे इमीडिएटली अनफॉलो. ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे वो दिक्कत नहीं आती, दिखता नहीं ना कितने लोगों को फॉलो करते. तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन एडिंग वैल्यू, लाइक नॉट इवन पोस्टिंग, इन एडिंग वैल्यू. कि आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर कोई बंदा आपका कंटेंट आके देख रहा है, एक प्रोफाइल आपके देखा, और वो 4-5 स्टार्टिंग के वीडियोस देखा, एंड उसको अगर वैल्यू ऐड नहीं हुआ, दिल नॉट हिट दैट फॉलो बटन. एंड इफ वो 4-5 वीडियो में से एक भी वीडियो से रेजोनेट कर दिया, दिल हिट दैट फॉलो बटन, राइट? एंड इफ यू कीप एडिंग वैल्यू, दिल कीप फॉलोइंग यू. यार नहीं यार, ये बंदा तो काम की बात करता है. क्योंकि वो क्या होगा ना, जब वो फॉलोइंग वाले पे क्लिक करते हैं फॉलोइंग कम करने के लिए, वो सबको चेक करते हैं, यार ये बंदा आजकल बकवास कर रहा है, काम कर, फॉलो कर. ये बंदा नहीं, ये काम की बात करता है, इसको रखते हैं. तो जस्ट what you can do from your end is be consistent in adding value and also posting. So ये दो चीजें अपने end पे बेस्ट कर लो, तो बाकी चीजें I think will be taken care of already. That's what I feel. Russell, you want to add anything? Like, have you all ever a moment where you all studied the algorithm or tried to study it? Yeah, something is happening, and then got looped in or anything such like that. Yeah, no, I agree with Sajal as well. Because you cannot really predict what's going to work, what's not going to work. So all you can do is just be consistent. And ऐसा नहीं है कि once you hit 100K or 200K तो तुम मतलब आराम कर सकते हो, एक रील डाल लो हफ्ते में. You have to just constantly post content, because like last week only मैंने 6 दिन content नहीं डाला because I was really busy. And I saw, the views getting dropped and like followers unfollowing me and all of it. So I think at whatever stage you are in content creation, consistency is the key to just success, I would say. Because agar tum content banana chhod doge ya tum complacent ho jaoge, then the followers are just going to go. So value addition and value adding, and then being consistent. So I think these are the two things really important. I would like to add something to that, to all of what these people have said. So कभी भी हम किसी को फॉलो करते हैं 3 रीजन से करते हैं. मुझे कोई पसंद है इसलिए फॉलो कर दिया, देखने में अट्रैक्टिव है फॉलो कर दिया, एंड दैट इज वेरी बेसिक. मुझे किसी की तरह बनना है, इंस्पिरेशनल लगा तो फॉलो करा, मुझे कुछ सीखने को मिला तो फॉलो करा. सो दीज आर 3 काइंड ऑफ पीपल दैट यूजुअली गेट फॉलो. नाउ यू अंडरस्टैंड यूर इन व्हिच कैटेगरी. एंड ऑल्सो आई डू अग्री विद देम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इज स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल. दैट इज व्हाई आई डू ट्विटर, बिकॉज ट्विटर का एल्गोरिथम इज स्लाइटली प्रिडिक्टेबल. It's when you see different लोगों के tweets, right? There's a format that works on Twitter, and there's this very specific kind of audience that usually appears on Twitter. So when you understand that, you understand your content style, and when you start creating content in a certain manner, and you also, people don't understand this. अगर engagement चाहिए तो engagement देना भी तो पड़ेगा. ऐसे मतलब कहाँ से? Especially when you're starting, you need to start giving engagement to other people, and people need to realize that this person, this account has a personality, at least on Twitter. That is how you start. Now Twitter के अंदर एक एडवांटेज मुझे लगता है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में मिसिंग है, एंड दैट इज स्पेसेस. द रीजन आई से स्पेसेस है, जब मैं इंस्टाग्राम लाइव करती हूँ ना, मेरी ऑडियंस मुझे देख सकती है, पर मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती. वो सिर्फ कमेंट्स में इंटरेक्ट कर पाते. बट व्हेन आई डू ट्विटर स्पेसेस, वन थिंग आई इंश्योर इज मैं रैंडम लोगों को ऐड करूंगी और सिर्फ उनको हाई बोलने को. अब इससे फायदा क्या होता है, समटाइम्स व्हेनेवर यू फॉलो समवन एंड उसका थोड़ा हायर फॉलो अकाउंट होता है ना, अगर वो आप उसको जानते भी हो, आपको उसका कंटेंट पसंद भी नहीं है, बट आपको वैनिटी मैट्रिक्स दिख रहा है कि इसके कितने फॉलोअर्स है और इसने मुझे हाई बोला है, आप इंस्टेंटली आपको सकता है आपको वैलिडेटेड फील होता है. एंड दैट इज ट्रू. बहुत बारी वैलिडेटेड फील होता है. सो व्हेनेवर आई डू अ ट्विटर स्पेस, आई इंश्योर वन थिंग दैट आई विल ऐड रैंडम पीपल, ऑब्वियसली नॉट एनी रैंडम अकाउंट, बट थोड़ा सा मतलब बायो क्लिक करके या डीपी देख के कि इट्स अ लेजिट अकाउंट, एंड आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई एम गोइंग टू स्पीक टू दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू से आपका डे कैसे जा रहा है. एंड आप एक ऐसे बेसिक से इंटरेक्शन करते हो ना, उसके बाद व्हाट आई डू इज, जब मेरा स्पेस एंड होता है, आई आस्क एवरीवन टू राइट अ स्मॉल टेस्टिमोनियल.
उससे क्या होता है, वो एक और बेटर रिकॉल वैल्यू बनती है. एंड यू नो व्हेनेवर दिस वर्ड ऑफ माउथ, व्हेन समवन सेज कि मेरी फर्स्ट स्पेस थी, मैं थोड़ी शाय थी, और मैंने कहा इट्स ओके, अपनी स्पेस समझो. मतलब एंड आई टेल देम कि कोई क्वेश्चन सिली नहीं है, कोई आंसर डम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स पब्लिकली appropriate, not inappropriate. I tell them, and then what happens is automatically people feel so comfortable around you that वहाँ पे थोड़ा better bonding हो जाता है, मुझे ये लगता है personally. And I completely agree with her कि even Twitter, अगर आप कुछ दिन के लिए content ना डालो, unfollow rate तो नहीं होता है, but एकदम से आपकी audience, you know, बहुत सारे इतने सारे content creators हैं, तो audience आपको थोड़ा थोड़ा forget करने लग जाती है. तो probably Twitter is मतलब उसका थोड़ा सा algorithm different है, but again I completely agree with her कि consistency बहुत जरूरी है content. And कभी कभी क्या होता है, consistency बहुत important, and also there's a mindset that you have while creating content. कुछ लोग आपको follow करेंगे, कुछ post पे आपकी तारीफ करेंगे, but next post में आपको जाके they'll say something very rude and very insensitive, and that happens a lot. I think सबके साथ होता है. आप किसी को person में नहीं बोलोगे, but because एक anonymity है screen का, आप बहुत चीजें बोल देते हो. And as a content creator क्या होता है, आप हमेशा react नहीं करते हो, आप कभी कभी comments mute भी कर सकते हो. But when you go through the comment section and you read it, trust me, it does impact you. It does impact you emotionally and things around that as well. आप अच्छा करने जाओगे, but then you need to tell yourself, अगर मैं 10, मुझे कहते हैं कि मुझे 10 comments आए, मुझे हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि 8 अच्छे होंगे and 2 बुरे मिलेंगे ही मिलेंगे. And when you create content, ना, reputation is something that's very important. So you will have to go through those comments and you need to understand, और मतलब जैसे election में trend क्या चल रहा है, वैसी market में या content creation के you know area में trend क्या चल रहा है. बिकॉज आप कंटेंट क्रिएटर है, आपका जो सब कुछ है वो एक रेप्यूटेशन से, एक ऑरा से, जो अपने ऑनलाइन लाइफ पर्सनैलिटी से, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके का यू नो इज इट फेवरेबल और नॉट. सो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो हैविंग अ माइंडसेट वेयर यू क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स. सो ग्रोइंग दैट थिक स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थिंग कि हम 3 तरीके के लोगों को भी फॉलो करते हैं, तो अंडरस्टैंड पूरा कौन सी कैटेगरी. Yeah, like Sejal also like said कि negative comments आते हैं, like 10 comments, so 8 are positive, 2 are negative. And like even if you are like going on an Insta live session or say putting a tweet or anything, a post, so there would be full of hecklers and negative comments and all. So what are your perspectives, or like asking to others, what are your perspectives when you are seeing those, and do you like improvise on that, or what's the whole procedure which you all follow? So for creators ना, I always say कि treat hate as engagement. मतलब आजकल अगर कोई comment भी करता है ना, तो I just reply to them, thank you for increasing the engagement on the post. I tell you why. So मैंने एक tweet भी किया था बहुत टाइम पहले कि a pro tip for creators, if you want to increase the engagement, make a spelling mistake in your story. यही spelling mistake करोगे ना, people will start, you know, एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि इंडिया में लोगों को क्या चाहिए कि या तो कहीं झगड़ा वगड़ा हो रहा है वहां पे जाके खड़े हो जाओ, या फिर कहीं गलती है तो दे वांट टू एक्ट स्मार्ट, दे वांट टू यू नो बी स्मार्ट. तो जहां पे उनको कोई पॉइंट दिखता है पॉइंट करने के लिए, तो दे जस्ट गो फॉर इट. इफ यू मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक यू विल गेट अनदर लेवल एंगेजमेंट. मतलब आई हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड अब तो मैं जानबूझ के कई बार कर देता हूं, एंड ठीक है, इट वर्क्स ऑल द टाइम. सेकंड, दे क्या होता है कि गुड कंटेंट, वेरी नाइस वीडियो, ये सब बोलते हैं. तो अब वो क्या है, अब एज ए कंटेंट क्रिएटर भी आप उन सबको इतना वो नहीं करते, लेकिन जो कोई किसी ने बड़ा सारा कोई हेट लिखा होता है आप देखते हो उसको जाके. तो समटाइम्स इट इज ऑलमोस्ट लाइक, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट अ क्राई फॉर अटेंशन. ठीक है, आई हैव सीन पीपल कमेंटिंग शिट, फिर देन आई रिप्लाई एंड देन दे विल लाइक, अरे नहीं हम तो ऐसा बोल रहे थे, यू नो, जस्ट वांट दैट अटेंशन वाला चीज. तो बस वो वाला चीज है. तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से कि अरे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सबको होता है, सबको बुरा लगता है एंड एवरीथिंग, बट इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग एंगेजमेंट इट बिकम्स फन, लाइक. तो वो ही है बस, बाकी और कुछ ऐसा नहीं. बिकॉज यू नो द कंटेंट यू हैव क्रिएटेड, यू नो योर वैल्यू, यू नो व्हाट यू हैव डन. सो इफ यू आर ट्रू विद योर content creation or whatever, okay, if you're true with your own work, then you need not worry about any such hate or something. Just treat it as engagement और मजा आएगा, और कुछ नहीं. I do the same, you know, so I reply thank you for the comment यार. मैं भी यही कर देती हूँ कि यार चलो comment तो किया है किसी ने. Nice. Even like Raslin was saying about value addition, okay, constantly add value and everything, and you are getting engagements, you are getting views. Then there is a thing called sponsored content, where there might be a case where companies are approaching you and they might be paying you some, so that you are advertising them and basically creating a sponsored content. So what are your views on it? Have you done in the past?
what type of sponsored content you think you should opt for, what you should not opt for, and anyone who wants to opt for. Yeah, so bro, initially क्या हुआ ना, I am अभी 18 and when I started like creating content I was 17 और अभी क्या हुआ like 17 पे ही I initially started getting brand sponsorships और भाई मैं 17 साल का था, मैं बौखला गया एकदम कि ब्रो कि दिस इज गुड मनी. हमें क्या लगता है बीइंग 17-18 कि ब्रो 5-6 हजार आ जाए, 10 हजार आ जाए, अपने खर्चे निकल जाएंगे. बट at 17 I was getting sponsorships और तब I जो मिल रहा था I was doing it. But then I got in touch with Ayush Shukla once and he paved a way for me और उसने मतलब काफी समझाया मुझे. And then I realized कि ब्रो अगर तू ऐसी कोई भी स्पॉन्सरशिप कर लेगा ना, पहली बात तो कि मनी वोंट, वो होता है ना कि मनी विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, एंड दैट आई हैव रियलाइज्ड कि it just gives you a sense of security and stuff, but चाहे वो अमाउंट 10,000 हो, चाहे वो अमाउंट 1 लाख हो, it will not give you happiness. जब आपके पास 10K की स्पॉन्सरशिप आती थी, जब आपके पास 50K की आएगी, जब आप पे 100K की आएगी, वो रेस में you will constantly run after the bigger bag. So that is one thing I've realized. And second thing is कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है आपकी, और आई डोंट नो कि ये हर ऑडियंस के साथ है या इंडियन ऑडियंस के साथ है स्पेसिफिकली. दे फील कि अगर कोई क्रिएटर कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट पुट कर रहा है, सो वो पसंद ऑटोमेटिकली द ऑडियंस डोंट लाइक द कंटेंट. बट ये मेरे साथ भी होता था इनिशियली, बट व्हेन आई एम नाउ एट द अदर एंड ऑफ the debate, so now I understand कि ठीक है bro, sponsored content भी होना चाहिए, but there should be a limit on choosing brands and the number of sponsorships you do in a month. So that is the formula I follow कि मतलब 4 sponsored content posts से ज़्यादा I don't do in a month, and वो भी brands भी selected होती हैं. And third, the most important thing is कि money don't matter in the long run. So even I agree with Sajal because like I just promote those brands in which even I believe in, and मुझे लगता है in some way even they can help students. जैसे मेरा content study abroad के around है, they can also help them getting into good universities, because मेरे content के around ये भी है कि बहुत सारे study counselors है, consulting firms है, but वो फिर private universities में भेज देती है. And I've always been like a advocate for going for public universities and taking good amount of scholarships as well. And because I understand the industry and because मैंने खुद apply किया, मुझे खुद scholarship मिली है, so I won't ever promote any such brand जो just mislead कर रहा है students को. So that is something like I'll just promote a brand in which I really believe in, and ऐसा भी नहीं है कि randomly कुछ भी promote कर दिया. And because content creation is just I would say another source of income for me, I do full-time work as well. So money was never like this thing for me कि यार मुझे पैसे ही कमाने हैं content creation से. So that is honestly the byproduct. My first reason to start content creation, especially in study abroad and education, was कि मैं help कर पाऊँ लोगों को. Yeah, so as a audience, Sajal pointed out very well कि audience बेवकूफ नहीं है. Audience are very smart. So if you are doing brand collaborations, if you, let's say आज मैं एक X brand को promote कर रहा हूँ this month, and next month I go and promote their competitor, मेरा खुद का credibility down हो रहा है कि यार ये तो ऐसे ही बोलता है. और वहीं पे अगर मैं एक X brand को प्रमोट कर रहा हूँ जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, माय ऑडियंस ट्रस्ट मी, तो अगेन उस पे जो ब्रांड पे क्लिक्स आएंगे ना, आप प्रमोट करोगे, वो ज्यादा आएंगे. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पिच ब्रांड जब आता है तो आप उसको बताते हो कि इतने हिट्स आते हैं, तो वही आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और वहीं पे आपकी वैल्यू बढ़ती है. स्पीकिंग फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर साइड, मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस डायरेक्टली नहीं करता हूँ. मेरे ब्रांड कोलैबोरेशन समथिंग लाइक कि इफ दे वांट मी टू होस्ट अ वर्कशॉप, कॉर्पोरेट वर्कशॉप, मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स बहुत लेता हूँ, एंड ऑल दीज थिंग्स आई डू. सो आई बिलीव कि बेटर फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को rather than brand collaboration, monetizing your audience. तो I was in conversation with someone जिसमें एक लाइन निकल के आई थी, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि nowadays it should be something like कि entrepreneurs tagged as content creators. So when we speak about content creation, the first few names which come to our mind are
Beer Biceps and other people, right? Right. So if they have created a lot of money, right? But do you think कि वो money और वो wealth उन्होंने केवल brand collaboration से नहीं? Brand collaboration something जो आपको पैसा जरूर देगा, but ये भी fact है कि अगर आपकी reach बाद में drop हुई तो उसका पैसा भी गिर जाए. So you should be smart enough to monetize and leverage your audience in more than one ways than brand collaboration. I am at 11.7K. Okay, it's not a huge number. Instagram, it's a very less number. Okay, and I have been monetizing my audience even before I started Instagram. So with the first video I uploaded, I immediately started monetizing my audience. Okay, and I used to take workshops. मैंने एक credibility बनाया. मैंने आज तक I have not done a single ad on my Instagram page. खुद के course का. Still, I have taught now approximately 7,500 people without running a single ad, just by word of mouth, just by कि मैंने अगर 1,500 का कोर्स में लॉन्च कर रहा हूँ, I'm making sure I'm delivering a value of more than 10,000 rupees. And if I'm doing that, I don't have to do anything else. My audience will act as my brand ambassador. वो जा जाके लोगों को लेके आएंगे. And I've seen that happen. And I've seen people, calling the relative. मेरे एक family है, उसके 18 लोगों ने एक साथ मेरा कोर्स किया. 18 people from the same family. They've all paid. ऐसा नहीं कि एक का पेमेंट करके सबने एक साथ देखा, सबने पे किया because they knew that I deserved that. And coming back to the brand collaboration point, I don't know why audience hate it. I think that audience in some way owe it to the creator because एक creator इतना मेहनत करके free में एक value add कर रहा है regularly daily उनकी life में. So at least they have this right to monetize it well when it comes to it. And as you pointed out कि कम अगर करेंगे और credibility के साथ करेंगे और अच्छे करेंगे तो again audience will not hate and smart. जैसे I have seen some people doing brand collaboration with very smartly, मतलब इतना subtle way में करेंगे कि एक value भी add, मतलब उनके brand collaboration की वीडियो में I have seen 90% value addition होगा, 10% brand promotion होगा. Such smart collaboration also work very well. अच्छी audience appreciate भी करती है कि this is how brand collaboration should be done ऐसा करके. So both these things I think that's my point. Yeah. I completely agree with what Sushant said, right? Because I think at certain extent brand collaborations are necessary as well, but you as a creator also owe it to your audience. You're very mindful of what you're advertising because सबसे पहले it's about your reputation that you built with your audience. And also I think audience is not dumb. Audience has a lot of brain. That there's a reason why they're following you. So being being credible with your brand and also being mindful of what you're advertising is something that's very, very necessary. And rest, I think what Sushant said is exactly what I was going to say. Like as Sushant said, how we are integrating. But when I scroll on the reels and see brand collaboration reels or anything like that, so they add a story element to it to keep it more engaging, and they just add story. Like Sharan with finance ka example le lo, any other content creator. So what they do is they add story element, वो कुछ डाल देते हैं, and then उससे वो आता है. But like I just had a curious question. अगर कोई brand आपका कुछ ऐसा paid content वाला reel है या कुछ ऐसा आपका if you have posted anything, so do you get less views on it or there's nothing like that? I think थोड़ा फर्क तो पड़ता है. That is what I've seen it with my reels कि जो normal reels है that would do really well, but कभी-कभी जब तुम brand post डाल दो then reach would drop, but again that depends on a lot of factors as well. Supposedly if I'm using like a trendy song or just doing a musical reel, that would pick up more fast rather than just doing a speaking or a conversational reel. So it depends on a lot of factors, but usually थोड़े बहुत views का फर्क होता है. But again, if you're doing it in a storytelling way, अगर तुम integrate seamlessly कर रहे हो, and even those reels perform really well. Like you mentioned Sharan and Anushka Rathore and all these people, they do it pretty well. Yeah, I completely agree. लेकिन मतलब इस question का भी I have the same answer कि you never know कि what will work. So 2-3 महीने पहले I did a brand collaboration and that crossed 800k views. That seems unreal for a sponsored post. So you definitely don't know what's gonna work, and the main thing is good in sponsored post, good storytelling, and you have to take care कि you are not exceeding 20% of the reel for promotion mark, क्योंकि that appears very salesy on your profile and your content. So that is the thing.
So basically doing it in a very subtle manner. Obviously you're selling, but not overselling is what is very necessary. But on Twitter, I think you don't exactly make a read, you put up a post, right? And as a content creator, what you're offering is a distribution network. जैसे let's just say you were watching TV and TV के अंदर एकदम से ad आ गया. वैसे you were watching TV for watching IPL or match, but एकदम से ad आ गया. At the end of the day, it also depends on how catchy the company ने जो content दिया वो कितना catchy है. That's number one. Number two, वो कितना value add कर रहा है. So that also depends on how well it's been integrated. Because on Twitter, you can't really add a storytelling thing, but you can also add a thread. You can put up a post on a very genuine note. Like, for example, sometimes creators just get paid to review stuff. Let's just say Sushant ka course hai. He came to me, Sejal, just give an honest review. And review jo hoga, basically, because you tried our product, you gave us our time. So we'll pay you something, but the review won't be paid. But then you just share how you felt with the course. And when a genuine review is there, that also attracts more audience. That is something that I've seen on Twitter. But Instagram, I haven't done a lot of paid things, so I can't comment for that. But for Twitter, it's more about how genuine the post is and also brand ne kya kis tarike ka content diya. That also matters. So, I remember Sejal in the beginning of her first answer, she said that she switched many social media handles, like she was first active on Insta, then Twitter and all. So we have various different set of audiences in different platforms. LinkedIn is more of a professional one. Twitter, as explained by Sejal, Instagram is a mix. So what are your views on it for say budding entrepreneurs? And our majority of the audience are students who are trying to build up a profile. So ideally, their better choice would be LinkedIn. So how can they build on their LinkedIn profile and engage with audience and interact with other work professionals as well? See, let's just say it depends on industry, number one. Let's just say if you're into entrepreneurship, startups and VC, LinkedIn is a very beautiful place to get started. But I think Twitter can give you an upper edge because Twitter is like LinkedIn, but slightly informal. And if you can get slightly if I can connect, let's just say Sushant's a VC and I can connect with him on a slightly informal level, it will just give me a leverage over a person who connected with him on LinkedIn. Because LinkedIn में उसको formal tone use करनी पड़ेगी, whereas मैं formally रहूँगी उसके साथ, professionally रहूँगी, और थोड़ा सा I can probably have a greater edge with him because थोड़ा सा हम informal people, so I can directly call him up or discuss stuff. So that is something that I'll say. But obviously, at least what I do for my LinkedIn was because I started with LinkedIn, right? I started in LinkedIn when I was in 11th grade. So when you're doing LinkedIn, the first thing you need to understand is optimizing your bio, being very mindful of what you're posting. And also, let's just say every person has multiple facets, right? Like, let's just say Sajal, he's a content creator, but I think he's also a student. He's also doing multiple other things as well. Let's just say, अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, वो सिर्फ ये लिखता है अपने बायो के अंदर स्टूडेंट एट XYZ यूनिवर्सिटी. वैसे तो 1000 स्टूडेंट्स हैं, तुम में क्या डिफरेंट है मुझे ये बताओ. So your bio is something that instantly gets you clicks. So you need to be very concise with your bio. You need to be very mindful because that is one of the things that attracts a person, right, to your account. You need to be very mindful of your DP as well. But I think there was a trend that went around कि Tinder का DP ऐसे होगा, Insta का ऐसे होगा. So obviously कुछ लोग क्या करते हैं, वो Tinder वाला सामान LinkedIn पे लगा देते हैं. कुछ लोग वहाँ पे अपना बायो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं. कुछ लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ. एंड if I were analyzing or auditing their profile, मैं सबसे पहले पूछूंगी अच्छा स्टूडेंट हो बट वहाँ तो 1000 स्टूडेंट है, तुम में क्या डिफरेंस है. So bio is something you need to get that click. You need to एकदम से catch that attention. So bio needs to be slightly catchy, but mindful of the profile that you're on. And also for I think work in business, Twitter can be leveraged as well as LinkedIn. But LinkedIn पे थोड़ा सा it is more formal. Professional space में भी थोड़ा ज़्यादा formal रहता है. ट्विटर में भी प्रोफेशनल स्पेस रहता है, बट वहाँ पे कभी कभी ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. एंड वहाँ पे लोगों को थोड़ी ज्यादा अनोनिमिटी मिल जाती है. तो कभी कभी वहाँ पे तारीफ के साथ और भी चीजें नेगेटिव साइड भी आ जाता है. बट एज लॉन्ग एज यू माइंडफुल एंड यू नो हाउ टू लेवरेज द प्लेटफॉर्म, यू कैन नेटवर्क एफर्टलेसली. बायो में तो आजकल एंटरप्रेन्योर भी लोग ऐसे लिखने लगे नहीं. हर बायो में एंटरप्रेन्योर है. ये क्या यार, सभी एंटरप्रेन्योर होते हैं. एंड यू नो द फैक्ट इज फाइन कि इट इज नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद समवन सुपीरियर टू यू ओनली एट अ फॉर्मल लेवल. जैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको किस चीज के लिए कनेक्ट करना है. इफ यू वांट टू कनेक्ट फॉर अ वन फॉर्मल थिंग तो ऑफ कोर्स लिंक्डइन इज अ बेटर प्लेटफॉर्म. वहां पे रिप्लाई भी आ जाएगा. अब आजकल मेरे पास इंस्टाग्राम में मेरे पास दिन के 100 मैसेज आते हैं, लिंक्डइन पे 10 आएंगे या 5 आएंगे. तो इट इज बेटर कि मैं वहां पे वहां पे सबको रिप्लाई करूँ.
जैसे अभी रिसेंट में, अभी आई इन बैंगलोर, बट उसके पहले एक हफ्ते पहले मुंबई में था. तब क्या हुआ कि देयर इज अ, नाम नहीं लूंगा, CEO ऑफ अ वेरी ह्यूज कंपनी. ही अपलोडेड अ स्टोरी अबाउट बांद्रा का ट्रैफिक. ठीक है, कि ही वाज स्टक इन बांद्रा का ट्रैफिक. एंड मैंने रिप्लाई किया कि व्हेन आई एम देयर, लाइक किस साइड, तो मैंने बताया बाद में दिख रहा है, बोला आई एम जस्ट थोड़ा सा आगे, कम इन टू माई कार. वी हैव नेवर इंटरेक्टेड पहले, आज तक कोई बात नहीं हुआ. आई जस्ट फॉलो हिम. मैंने बस ऐसे ही रैंडमली रिप्लाई कर दिया उसके बांद्रा की ट्रैफिक वाली, ही इज योर वेरी ह्यूज कंपनी. एंड ही जस्ट कॉल्ड मी इन द कार. वी हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन. आधे एक घंटे तक बात हुआ. और उसके बाद मैं रियल एस्टेट का काम करता, एक प्रॉपर्टी का डील भी शायद अब हो जाएगा उसके साथ. मतलब networking is an art. आप you don't have to always be formal, which is a very nice point. ठीक है, अगर आप और also you have an upper edge, that's also very true, कि अगर आप informal level पे interact कर रहे हो किसी के साथ, तो एक बहुत अच्छा edge आपको मिलता है अगर आपका वो connection बैठ चुका है. जैसे all the creators, right, finance में especially जितने भी हैं, चरण, अभी कल ही I was with चरण, तो जितने भी लोग हैं, तो कल ही मेरे को किसी ने पूछा कि dude, you are not that big on Instagram, but how do you know all these people? एक बहुत सिंपल और बहुत बेसिक और बहुत सही क्वेश्चन है कि मैं क्यों जानता हूं इनको. मैं बोला यार कुछ नहीं, बस रैंडमली आई जस्ट रीच्ड आउट एंड मतलब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको हमेशा यू हैव टू ऑप्ट फॉर द फॉर्मल सोर्स, मेल करना पड़ेगा समथिंग. इट डिपेंड्स ऑन किस चीज के लिए अप्रोच कर रहा हूँ. आई डिडंट हैड एनी फॉर्मल वर्क, तो मैंने ऑब्वियसली फॉर्मल सोर्सेज से अप्रोच नहीं किया, मैंने इनफॉर्मल सोर्सेज से अप्रोच किया. तो इट डिपेंड्स ऑन क्या काम है. अगर कोई वन टाइम काम है, ऑफ कोर्स लिंक्डइन इज स्टिल द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट. कि एक फॉर्मल काम है, आपने बहुत ही स्लीक सा फॉर्मल मैसेज ड्राफ्ट किया, भेजा, they'll for sure see it and they'll reply. ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी है, तो आई थिंक other than LinkedIn platforms are also a better way to network with people, of course. Yeah, I also believe like कि for students and for like entrepreneurs and people who are interested in startups and stuff, उनके लिए Twitter and LinkedIn are two platforms which are the best. क्योंकि उसपे क्या है ना यार, रिफाइंड ऑडियंस आ रही है, मतलब उसपे बचपन का प्यार देखने नहीं आ रहे लोग. तो उसपे मतलब कि मौज और टिकटॉक, ये जो शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स है, इन पे लोग यही देखने जा रहे हैं. फिर उसके बाद रिफाइन होके आपकी ऑडियंस आती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद द मोस्ट द क्रीमी लेयर कम्स टू ट्विटर एंड लिंक्डइन. तो उसपे भले ही मतलब लोग हैं, लेकिन वो देखने वो नहीं जा रहे. So that is, उस पे बहुत ज्यादा सीरियस ऑडियंस जाती है. एंड दैट इज व्हाई लाइक आई वाज टॉकिंग टू सेजल कि इंस्टाग्राम के 2 लाख या 3 लाख 4 लाख फॉलोअर्स आर इक्वलेंट टू लाइक 40K और 50K फॉलोअर्स ऑन ट्विटर. सो वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. वो दिखता भी है ना, इफ यू सी सेजल, उसका प्रॉपर कल्ट है ट्विटर पे 50K, बट ही इज वेरी राइट कि वो इंस्टाग्राम के 2-3 लाख फॉलोअर्स के बराबर है. तो या दैट्स वेरी ट्रू यार. जैसे सजल ने बोला कि रिफाइन हो जाती है ऑडियंस, क्योंकि इंस्टाग्राम तो सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही है, मतलब ट्विटर भी है, बट इंस्टाग्राम पे लोग आते ही है, चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, विल जस्ट स्क्रॉल रील्स. बट वेयरएज लाइक आई एम इनटू पब्लिक पॉलिसी, एंड इंस्टाग्राम पे अब मैं किसी को बताने बैठूं या नेटवर्किंग करने बैठूं, नॉट मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट दिस फील्ड, वेयरएज आई हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन. तो वहां पे मैं उन प्लेटफॉर्म्स को उस वे में यूटिलाइज करती हूँ. एंड वेयरएज इंस्टाग्राम इज ओनली लाइक टू जस्ट कनेक्ट विद अ क्रिएटर, बिकॉज आई नो दे आर द मोस्ट एक्टिव देयर. Whereas if I want to connect with any policy professional, I will definitely go and reach out to them on Twitter or LinkedIn. So it really depends on your field as well and what kind of areas you're really interested in. So and then optimally utilizing those social media platforms for that. Like Ruslan, you like mentioned about public policy, and you're like founder of Publicity Radio. So like our audience would like love to know about it more and about the platform. Okay, yeah. So public policy is basically a field in which you can get to work with the government and people who create policies. It can be in any sector: education, healthcare, tech. And during my college, because I come from an economics background, I always had inclination towards the development sector, going at the grassroots level, working and understanding what are some of the governance challenges and how as an individual I can solve it.
And then, this field started emerging a lot in India as well. It is very well established in US and other countries, but in India, it is still at a cusp of a boom. So I was like, okay, then what I can do, and not many people are aware about it. They don't know, they can also work with the government of India. They can do some internships. They can also, eventually get a job. Currently, I'm working with Chhattisgarh government. We are working in the healthcare sector. So a lot of people keep asking me these questions. How did you land up a job with the government? And I was like, it's very much possible. So the main aim and objective of my platform is to make people aware about, okay, this is a career, and you can actually get to work with the government without actually appearing for any of the exams, without applying for UPSC, so to say. And so that is like the initiative, and I'm still building the platform, and where people can, like-minded people can come together from different fields, and then who wishes to make a career in public policy, it's just a platform for them. Sushant, you want to add on about money monitors and what exactly it is? Okay, so as इसने बोला था ना कि मतलब you figure out कि कौन से platform पे वो क्या disclose करना है. तो most of the people don't know that my main company is FinSeva, not Money Monitors. So FinSeva is something which provides financial services to HNIs out there. Different companies, CEOs, CFOs, all these are my clients. I provide lending, investment services, real estate services, everything to them basically. So that's my main thing. That's what I do. That's where I earn money. Okay, Money Monitors is something which I'm basically building on the fin edtech side, okay, financial education की side पे. So on that, what I focus on कि बहुत सारे platforms हैं आज education में, but एक handpicked mentors कहीं नहीं है, और लोगों को ये भी नहीं पता किससे पढ़ना है first of all, और उससे पहले ये भी नहीं पता पढ़ना क्या है. Right. So what I try to do is I try to bridge that gap by providing finance में जितने भी domains हैं उन सब के अलग-अलग courses with handpicked mentors. It is yet to launch बाकी बड़े level पे. अभी तो केवल I am taking the courses. That's one thing I do. फिर उसके बाद I have onboarded 28 different colleges and stuff जिनमें हम लोग courses चलाते हैं financial education के. Even medical colleges में हम लोग financial education courses चलाते हैं, because क्या हो जाता है कि इंडियन फैमिलीज में होता ये है कि मनी के बारे में कोई बात नहीं करता. Is that word में दे से ना कि डिनर टेबल पे मनी डिस्कस नहीं होता. That is the very big problem with India. तो what we are trying to do is कि आज मान लो कोई डॉक्टर भी बन जाता है, तो they don't know how to make money from money. They can treat patients and get money. That's what they know. बाकी उसके आगे उनको making money from money नहीं आता. तो that's where I also feel कि उन लोगों को भी personal finance की जरूरत है, उनको personal finance सीखने की जरूरत है. तो for me, I have been fortunate enough कि मेरे out of all the students, more than 50% students मेरे medical side से आए थे, which was a shock to me also. तो that's what I do. सारे colleges में हम लोग अपने courses run करते हैं, जिसमें क्रिप्टो भी आ गया, पर्सनल फाइनेंस भी आ गया, इन्वेस्टमेंट्स भी आ गया, फंडामेंटल टेक्निकल सब आ गया. ठीक है, मोनेटाइजिंग स्किल्स भी एक हमारा सेक्शन है जिसमें यूट्यूब भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, a lot of things are there. रियल एस्टेट का भी एक कोर्स है, मतलब everything related to money basically. That is what Money Monitors does. ठीक है, so yeah, that's my platform. बाकी FinSeva is something which I run for the main thing. Yeah. Like anyone else who is like hiding any side hustle which they have and they are working on, or anything they want to speak about. Good. So, okay, like I just I would like save you all your time. So anyone like who wants to enter into the space of content creation, anyone who just want to start beginning into it. So what tips do you want to give to them? Bro, same advice, consistency. So when you are like starting off, every platform rewards consistency. It rewards nothing else. Ki YouTube ka bhi, like I read somewhere ki YouTube ka bhi algorithm, it takes 22 to 23 videos to recognize your channel. And same is the case with, I believe, every platform. If you are posting consistently and delivering value to your audience, so वही है कि one post will pop up, two posts will pop up, and you will probably like grow. Yeah, even I want to say also, I just want to add another point is make something which you really like. It can be vlogs, it can be anything, because अगर तुम्हें consistent रहना है ना for the long run, तो फिर अगर तुम enjoy नहीं कर रहे हो, the kind of, जैसे बहुत लोगों ने देखा है, they start making content they don't really like, they don't have much knowledge about, 10 videos खींच लेंगे, 20 videos खींच लेंगे, but उसके बाद they stop because they don't have anything else to add.
make sure you choose that space, that niche specifically, which really interests you, and so that you can just stay consistent for a very long time. Because बहुत लंबी game है ये, it's a marathon, so like you have to play it for a very long time. So make sure you just choose content and choose that particular niche which really interests you. Background. No, it's not. Sorry. Yes, Sushant, Sejal, if you want to add on. Yeah, so I personally feel, एक छोटी सी मिस्टेक जो क्रिएटर्स जो नए आने वाले हैं वो करते हैं कि जैसे when we think of going to gym, before even buying a gym membership, we buy gym clothes, right? कि perfect shoes चाहिए, perfect gym clothes चाहिए. तो content creation में लोगों को क्या लगता है कि to start they need a very good camera, they need a very good Rode का wireless वाला mic चाहिए उनको, पहले सब कुछ बोले कि पहले ये सब करेंगे फिर जाए content बनाएंगे. You should remember Bhuvan Bam. He's उसने एक normal Galaxy, Samsung Galaxy Ace Duos, जो कि शायद 7,500 का फोन आता था, and a very his old house. बस उससे उसने अपना YouTube ग्रो किया है, राइट? सो बाकी चीजें ऑफ कोर्स मैटर करेगी कि आप when you have reached a certain level, you have to increase your production quality and stuff. वो investing in your own content, that is very important, but not at the beginning stage. At the beginning stage, you need to make name for yourself. और आप अगर वैल्यू डिलीवर कर रहे हो ना, और पीछे से आपकी आवाज इतनी स्ट्रांग अच्छी नहीं आ रही, इतनी क्लियर नहीं आ रही है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो भी ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो तो. और वही आप चाहे बहुत अच्छा सेटअप लगा लो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर लो और आके बकवास कर रहे हो, तो व्हाई विल दे फॉलो यू? सो अगेन द ऑडियंस आर वेरी स्मार्ट, ठीक है? सो इट्स बेटर कि अपन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इन सब चीजों फोकस करने के बजाय जस्ट फोकस मेनली ऑन द कंटेंट फर्स्ट, एंड देन ये सब चीजें विद टाइम होती ऑटोमेटिकली हो जाएगी. पता भी नहीं पड़ेगा कब नया माइक आ गया, कब नया क्या आ गया. यू वोंट एवर बिलीव. मतलब तो धीरे धीरे जस्ट स्टार्ट, कीप एडिंग वैल्यू, बी ट्रू टू योर ऑडियंस, ठीक है? एंड कीप इंटरेक्टिंग विद देम यार. मतलब मैं सो मेरे इंस्टाग्राम के मेजर फॉलोअर्स मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, एंड आई हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गोइंग लाइव रैंडमली रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, एंड उस टाइम पे जो कॉन्वर्सेशंस मेरे स्टूडेंट्स के साथ होती है ना और मेरे फॉलोअर्स के साथ, बहुत ही रियल, बहुत ही रॉ, तो फीडबैक्स भी मिलते हैं बहुत रॉ, उस टाइप की चीजें होती है. तो कीप डूइंग सच थिंग्स एंड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू देम एज अ फ्रेंड, जिससे समवन दे कैन लुक अप टू, समझेंगे दैट तो हो जाएगा. मतलब ज्यादा कोई लोड नहीं है, चिल करो. मतलब आई हैव नॉट एडिटेड वन सिंगल वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम. एक सिंगल वीडियो आज तक एडिट नहीं हुआ है. There has not been, अभी जाके मेरे कुछ ऑफिस वाले लोग बोले कि थोड़ा थंबनेल बनाए थे, लास्ट के 3 वीडियो में थंबनेल दिखेगा, उसके अलावा थंबनेल नहीं दिखेगा, ठीक है? नथिंग एज सच. मेरा इनफैक्ट ये होता है कि आई एम टॉकिंग टू अ क्लाइंट एंड उससे बात करते करते लग रहा है यार ये तो सबको पता होना चाहिए. जस्ट फोन रख के वीडियो निकाला, शूट किया, डाल दिया, खत्म. तो आई नो कि बाकी लोग बहुत मेहनत करते हैं, दे शुड डू इट. मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर मैं इतना सा करके थोड़ा बहुत ग्रो कर सकता हूँ तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट. दैट्स माय पॉइंट. या Right. Bro, I agree with you partially. Like I agree 90%, and the rest 10% where I disagree is कि ये थोड़ा platform specific भी है, like equipments में. So for Instagram, I would say कि invest in a good phone and specifically iPhone. क्योंकि this is a little bit of a tech advice and stuff. What happens in Instagram is initially it was designed for iOS devices, so it is little bit optimized for iPhones. So when I was also starting reels, मैंने सिर्फ 2 रील अपनी एंड्रॉइड फोन से डाली थी, एंड देन आई रियलाइज्ड, और एक रील मैंने अपने सिस्टर के आईफोन से डाली थी. आई टिल टुडे आई हेट आईफोन्स. भाई कुछ भी नहीं होता, बहुत महंगे होते हैं. सो मैंने अपनी बहन के फोन से डाली, एंड I saw the difference in the quality. So equipments, like it is specific to platforms like Twitter में, LinkedIn में it does not matter. भाई आपका फोन नहीं दिखेगा उन प्लेटफॉर्म्स में, YouTube में भी नहीं दिखेगा, मतलब फोन तो किसी में भी नहीं दिखेगा, but the quality differs, and that is the point I am trying to make. Agree, totally agree. Also, if I were to add something, like obviously being consistent is important. So sometimes, you can create content or you can share what you're learning, but also sometimes you can make a personality the content. Like just things you're interested in, things you care about, and you can try driving that around content and understanding तुम्हारे audience को क्या चाहिए, and doing a very smooth integration between the two. Also understand आपके लिए सही platform कौन सा है. Let's just say अगर आप dance teacher हो तो आप Twitter पे नहीं आओगे.
बिकॉज अब ट्विटर एंड डांस का कोई मेल नहीं है. आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, लिंक्डइन पे भी शायद से जाएं अगर आप कोई अकेडमी खोल रहे हैं, बट लिंक्डइन के ऊपर डांस वीडियोस पर्सनली मुझे सेंस नहीं बनाते, बट अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. ऑल्सो there's a very big follower craze as well, कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स क्यों चाहिए. दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका काम क्या सिर्फ एक नीश ऑडियंस बना के हो रहा है, और यू नीड अ बिगर फॉलोअर बेस. आपका रीजन क्या है कंटेंट क्रिएट करने का. कुछ लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनका कॉस्ट उनको और सेल्स बढ़ानी है, इसलिए उन्होंने बनाना शुरू करा कंटेंट. कुछ लोगों ने सिर्फ ऐसे रियलाइज करा कि मजा आ रहा था कंटेंट बनाने में, अब बस बन गए कंटेंट क्रिएटर. सो अंडरस्टैंड आपका पर्पस क्या है. सबको एक वैनिटी मैट्रिक्स दिखता है, बट वो वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे ना मेहनत दिखती है और ना ये समझ आता है कि कितना बड़ा एक बेस बनाना है और क्यों बनाना है. जब आपको आपका क्यों पता होगा ना, या आपको ये पता होगा कि अच्छा मुझे इतने ही चाहिए यानी ये मेरा पर्पस है, आप ऑटोमेटिकली रास्ते निकाल लोगे. जैसे मैं अभी सोनीपत में हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे क्यों जाना है, अच्छा ये मेरा रीजन है कि मेरे एक समिट अटेंड करना है. समिट अटेंड करने से ये फायदा, यू ऑटोमेटिकली फाइंड वेज. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट कंटेंट ऑन अ वेरी जेन्युइन मोड एंड यू जेन्युइनली एंजॉयिंग इट, आप आराम से रास्ते निकालोगे. एंड अगर नहीं है तो नहीं होगा. लाइक आई एम एट माय कॉलेज राइट नाउ, इट्स बीन 3 weeks, आई हैव अ बैड थ्रोट, and I still manage to do choti spaces in between because I love interacting with my audience and I love just asking people आज का plan क्या है. But obviously my content is around probably discussing financial literacy, it's around probably discussing startup entrepreneurship and other things where I learn with them. तो हम ये कहते हैं, it's no advice that I as a content creator give, but I call it a peer-to-peer learning mechanism. तुम भी सीखो, मैं भी सीखती हूँ साथ में. तो मैंने तो अपनी क्लासरूम ही पब्लिक उस पर बना दिए फोरम पे. तो कभी कभी जब कहते हैं कि आपका एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आप क्या करो, अपनी लर्निंग शेयर करने लग जाओ, अपनी पर्सनालिटी को कंटेंट बना दो. एंड अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी शेयर करो. बट एक चीज समझनी पड़ेगी कि फिक्सिंग जरूरी है, बिकॉज ऐसा एक दिन में नहीं आता है, वो एक एक्सपीरियंस के साथ आता है. बिकॉज आप एक बार एक रूट कमेंट पढ़ोगे, आप थोड़ा सा इफेक्ट होगे, आप बारी बारी डिफरेंट बारी आएगा, देन उसके बाद यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर, रूट कमेंट्स आर देयर, बट you might grow thick skin for it, but don't get okay with it. And talk also, if you think it's necessary, talk about, probably even share your experience with hate comments, share your experience with mental health when you read those hate comments. क्या पता किसी को similar problem चल रही हो, it might help them. So understanding certain things and also understanding मेरा content किस platform के लिए best है और मैं किस platform के लिए best suited. Just because Twitter ऐसा platform है जहाँ पे micro blogging होती है, वहाँ वो dance या cooking blog के लिए नहीं है. अंडरस्टैंड कि वो किस चीज के लिए हम कहाँ फिट हो रहे हो. आप एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, जब हम कहते हैं हम स्टार्टअप कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल रहा. एक क्रिएटर का भी प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, उसके कंटेंट का भी होता है. एंड अकाउंट की जब तक पर्सनैलिटी नहीं है तब तक फायदा नहीं, क्योंकि कंटेंट रिसाइकल ही होना है. कहते हैं अगर कोई, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई शार्क टैंक पे कंटेंट बना रहा है, अश्नीर ग्रोवर पे कंटेंट बना रहा है, अश्नीर ग्रोवर मतलब सजल या सीजन के अकाउंट के लिए अलग चीजें तो नहीं करेगा ना, कि सजन ने रील डाली तो सजन के लिए आज ये कर दिया, सीजन के लिए ये कर दिया. कंटेंट गेट्स रिसाइकल्ड. द ओनली रीजन व्हाई पीपल स्टे on your account is firstly for how you present it and secondly for the creator's personality. Personality is like that salt or masala that's there in the food. So that's the seasoning. So your personality is very, very important, and as long as you're enjoying content creation, do that. If you realize कि certain platform थोड़ा saturate हो गया, साथ ही साथ अपनी दूसरे audience, दूसरे platforms भी you can also try migrating and understanding कि क्या ये platform मेरे लिए सही है साथ में, because as a creator you also need to stay relevant with time. And I think दो तरीके के क्रिएटर्स होते हैं. इफ यूर एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर इज वेल, राइट, कहते हैं कि मैं कोडिंग सिखाती हूँ, उस टाइम के बाद मेरी ऑडियंस ग्रेजुएट हो जाएगी, तो मेरे पास एक नया सेट ऑफ ऑडियंस आएगा, उनको फिर से एक वार्म लीड बनाना पड़ेगा. वेयर इज एक ऑडियंस है जो आप जैसे ग्रो होते हो, आपकी पर्सनैलिटी से वो लोग भी ग्रो होते हैं. तो वहाँ कॉन्टेंट थोड़ा सा, अगेन उसको भी you'll have to be mindful how to navigate your audience and how to make that audience stick with you. That is something that's very, very important in the whole business of content creation. It was like really amazing. We had like really amazing time. Thank you all for like making this panel discussion amazing. And it was like we made this really fun and interactive, and we're like taking back loads of learning today. I would like to wrap it up and by like valuing your time too. And like on behalf of IIT BHU, I would like to thank you all for taking out your time being here today. Thank you very much. And yeah, for audiences, stay tuned for the upcoming events of E-Summit 2022. Hoping to see you in other sessions as well. Thank you. Thank you, man. It was a lovely session. Yeah. Thank you. Thank you.